everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BS Show Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very ethic startup, and in this video we are going to talk about JMI CET 2026. Yes, you heard it right. Jamia Millia Islamia. It's again one of the most popular law colleges of the country if you want to pursue law. Apart from law, it also gives a lot many courses, but we are going to pertain to just law courses in this very video. Other videos are gonna come which would be pertaining to different other courses that Jamia provides, or maybe DU colleges provide, or maybe what are the courses by which you register for by CUET, or maybe in fact even how to register for CUET and all sorts of things. So maybe to prepare for the domain section of CUET, etc., etc. All these videos are gonna come very soon. First of all, हमारे अभी YouTube channel पर I have been uploading अपने OLEDs के place list में I have been uploading around 5 videos I've already uploaded if I'm not wrong. One video is based on bits law, other one is based on LNAT, then we have NLAT, then we have MHCET, and lastly we have of CUET DLLB. So ये videos मैंने अब तक डाल दी. Let's suppose your CLAT and ALET didn't go well and you are still thinking to pursue law, and of course not shattering your dreams again. But gates are open for you. You still have a lot many opportunities left. I also have prepared a video on SLAT as well. And बहुत सारे, in fact, even if you're somebody who's looking forward to crack CLAT 27 or maybe CLAT 28 or maybe ALET 27, 28, still keeping all these exams in mind is also the most imperative thing of all. इसमें हम बात करने वाले हैं about जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, JMI सेट. इसका क्या पैटर्न रहता है, ये पेपर कैसे होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ वी हैवंट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ notification regarding their admissions opening up for 2026. However, one notification we had received regarding that they're gonna open their admission window for 2026 to 27 admissions from 5th March onwards. However, I'm a bit dubious about it because last year they had kept their admission window open for law entrance exams only till 31st Jan. So I think very soon they would be releasing their update regarding their admission portal being opening regarding this law entrance exam itself. So if let's suppose if I am wrong in this, or maybe अगर आज ये वीडियो अगर आ भी चुकी है आपके पास और नोटिफिकेशन अगर आ गया है तो it would be there on my Instagram page. आप वहां पर मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, आप देख लीजिए. In these videos I basically pertain with the syllabus, exam pattern and everything. एंड लेकिन बाकी की वीडियोस में जो मैंने बिट्स लॉ, एलनैट, एनलैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें मैंने प्रॉपर एडमिशन डेट्स आपको बता रखी हैं बिकॉज वो अवेलेबल थी. इसका अब तक आई नहीं है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव फर्स्टली कि ये जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है ये 120 मिनट्स का होता है. अगेन ये सेंटर बेस्ड एग्जाम है. ठीक है, means there would be a center that would be allocated to you where you need to give the exam, and it's a pen paper exam. It's not a kind of computer based exam जैसे MHCET है, जैसे CUET है, SLAT है, ये बाकी सारे एग्जाम्स हैं. ये ऑनलाइन हो, ये दिस वन बिट्स लॉ इज एन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम. बाकी सब आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, बट दिस इज नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड, इट्स अ पेन पेपर टेस्ट, रिमेंबर. Then you have 150 questions in this particular exam. So with 150 questions, 120 minutes is given to you, and you have +1 is given for every correct answer, and for every incorrect answer there is a negative marking. Remember this thing. In all these entrance exams जो अभी तक हमने देखे हैं CUET को छोड़कर, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इधर नेगेटिव मार्किंग है. तो इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग जितनी क्लैट में होती है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. तो सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. जैसे CUET में तो हमने फिर भी बोल दिया कि आप काफी अटेम्प्ट कर लो क्योंकि आपको 5 नंबर मिल रहे हैं हर करेक्ट आंसर के, और इनकरेक्ट में आपको -1 मिल रहा है. बट अगर आपको हर करेक्ट के +1 मिल रहे हैं, इसलिए वी अर्जिंग यू टू मेक श्योर to be again very sure about the number of questions that you are attempting. Fine. So then let's talk about the paper breakup in this. Fine. So the very first go you have the legal reasoning section. देखो कोई भी हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम बोले ना, सारे सेक्शन से ओवरलैप करते हैं. When you're preparing for CLAT, you are simultaneously preparing for other law entrance exams also. So it is not a very thing that okay, if CLAT is done now, I have to prepare very rigorously for other entrance exams. Yes, you need to prepare because you need to brush up the previous concepts, but at the same time, you are well aware of all the concepts previously because you are prepared very thoroughly for CLAT. Legal is one of the section, legal reasoning. Then you have English section. Then you have general studies section.
Then you have GK, sorry, you have current affairs. General studies is basically your GK, general knowledge. Then you have elementary math as one of the sections. मैथ का वेटेज सबसे कम है, just like हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में होता है. तो टॉकिंग अबाउट फ्रॉम this legal reasoning perspective, you get 40 questions, again 40 marks, 30 questions for English, 30 marks, 40 questions for general studies. For your again current affairs, you get 30 questions, and for maths, you get 10 questions. Simple sorted. तो टोटल में 150 आपको मिल रहे हैं, राइट. तो दिस इज द पेपर ब्रेकअप, पेपर पैटर्न, एवरीथिंग. इसका पेन पेपर मोड का टेस्ट है. देखो लास्ट ईयर फ्रॉम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जीएमआई सेट 2025 पर्सपेक्टिव, विंडो बंद हो रही थी एडमिशन की 31 जैन. ठीक है, तो एक बार देख लेना. आज के दिन में आई एम मेकिंग दिस वीडियो विच इज 4 जैन. आपके पास आएगी तो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, बट एडमिशन का विंडो आई होप कि आपको पता चल जाए तब तक. अदरवाइज ऑन माई इंस्टाग्राम as well as on my telegram group, I would be posting things. Great. तो आप इन चीजों का ध्यान रख लेना. These were the things that was very necessary for you. Now, how to prepare for this exam? Now, for current affairs and for general knowledge. See, for current affairs, this same standard thing I'm going to tell you that I have told in other exams as well. See, 8 to 10 months का आपको अच्छे से आना चाहिए जीके और करंट अफेयर्स. इट्स बेसिकली करंट अफेयर्स बिकॉज स्टैटिक जीके तो स्टैटिक जीके ही है, बट आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए 8 to 10 months का. एंड ये स्पेशली जो 6 months का होता है ना, आई एम रिआइटरेटिंग ओवर दिस, आई हैव बीन रिआइटरेटिंग ओवर फॉर द पास्ट मेनी डेज. You should know 6 months ka current affairs at the back of your hand. This is very imperative. So this is done. 6 months ka, 8 to 10 months is also done. Elementary math. See, math is very, very simple. It's like, it's very simple. Remember, algebra is one of the topics that you didn't do for, and geometry. You didn't do it for your CLAT, you didn't do it for ALET, but you need to do for this. So remember algebra and geometry, because in algebra you get simple liner based questions. So for liner based questions, you should be thorough with the concepts of algebra. It's 10 marks, but it matters a lot because it is going to be game changer as always, because not many people are, I would say, well to do with math. So if your hands are there on math, right? If you are completely thorough with it, you would be able to solve all the questions, and it's going to be game changer, obviously, right? देन यू हैव जनरल नॉलेज का डिस्कस कर लिया, मैथ का कर लिया, एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स आता है, ठीक है. तो जीके सीए इज डन. जीके के लिए अगेन स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जीके इज वन ऑफ द बुक्स दैट इज सजेस्ट फॉर स्टैटिक जीके. हाउएवर इफ यू आर फॉलोइंग एनी कोचिंग की मैगजीन, एनी कोचिंग का मटेरियल फॉर स्टैटिक जीके, उसको भी आप पढ़ सकते हो. अदरवाइज फॉर स्टैटिक जीके, इवन फॉर क्लैट वी सजेस्ट लूसेंट जीके, बट कभी कभार बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है पढ़ना. तो अगर आपको बिल्कुल एंड में इसको नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ते आ रहे हैं क्लैट के लिए, आप वही पढ़िए अपने कोचिंग के नोट्स. सिंपल. फिर हमारे पास आते हैं इंग्लिश में. इंग्लिश में सी यू हैव आरसी, यू हैव सेंटेंस करेक्शन, सेम सिलेबस चल रहा है. ये सिलेबस आपका एमएचसीटी का भी है. तो एमएचसीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका मई के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाएगा, टेंटेटिवली 8 मई को, तो अभी डेट्स आई नहीं, अगेन वो डेट्स आ जाएंगी. और जो सीयूईटी है which is towards the later part of May, उसमें भी same syllabus is tested. Idioms, proverbs, antonyms, synonyms, grammar, etc. So these things are gonna come. Grammar में basic grammar at least you should know, and questions आप लगा लेना from books. You must be practicing from your coaching books से. फिर कोई भी material होगा, same English आती है, उसको practice कर लीजिए. English is also done. Legal. Now, legal may remember you get principle based questions. Again, I have been emphasizing whether it is NLAT, whether it is your MHCT, you get principle based questions in this. तो principle based question एक principle लिखा होगा और वहां पर एक option आपको टिक करने पड़ेंगे. This could be anything, like let's suppose if I say tort is a civil wrong which is not a breach of contract, a breach of trust, and then चार आपको बोल देंगे कि बताओ इनमें से tort कौन से, चार options they're gonna give you. So you're gonna pick up those any out of those particular options. You need to pick up one option which deals with the principle which is given to you. So principle based questions आएंगे. Majorly देखा गया है tort से question पूछे गए हैं और contract से question पूछे गए हैं. Of course evergreen topic है. Law school में जब आप आते हो पहले साल में यही पढ़ते हो tort और contracts. So it's an evergreen topic. These both are evergreen topics. You need to do them. Torts and contracts, principles, everything. Basics of family law have also been asked, as it is again मेजरली इन इस्लामिक ओरिएंटेड कॉलेज. तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस्लामिक लॉ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेजरली फैमिली लॉ में. तो इस्लामिक लॉ को आप करके जाइएगा.
अगर अगेन आपको फैमिली लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं इसमें, मेरे यूट्यूब चैनल पर फैमिली लॉ की मैंने फुल फ्लेजेड वीडियोस डाल के रखी हुई है, उसको आप देख लीजिए, यू वुड बी वेल सॉर्टेड विद इट. ओके फाइन, एंड डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. टॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ से कम ही क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं क्रिमिनल लॉ से. तो फिर भी जस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? व्हाट इज अगेन डिफरेंस बिटवीन मर्डर, culpable homicide, right? And then basically these two terms. So basically whatever the thing is that whenever any law oriented or any other competitive exam paper is prepared for that matter, the paper setters don't usually include heinous crimes as passages because they don't want you to deal with those. However, अगर आ भी जाए तो you should know the difference between all of these. Then house breaking, house trespassing, criminal breach of trust, negligence, etc., etc. वो सारी चीजें आपको पता, theft तो हाँ, and other things. So you should know all these things which pertain to criminal law, not in detail, but yes, things could be asked. Then in static GK में, static GK में आपको पता है क्या आता है, I think बताने की जरूरत नहीं है. एंशियंट हिस्ट्री में जो आता है, मिडीवल में जो आता है, मिडीवल अच्छे से कर लीजिएगा, मॉडर्न अच्छे से कर लीजिएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फुल फ्लेजेड सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है. इधर पॉलिटी के सारे आपको फ्रॉम बेयर एक्ट्स मैंने पढ़ा के रखे हैं, तो काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. प्लस स्टैटिक का भी मटेरियल बताया हुआ है, तो पॉलिटी उसमें से कर लीजिएगा. कॉन्स्टी, इकोनॉमिक, सॉरी इकोनॉमिक्स, अगेन आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वीडियोस बेस्ड ऑन इट, सो यू कैन फाइंड दोस 3 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के, देख सकते हैं, वेरी वेरी बेसिक लेक्चर्स, राइट? And बाकी ancillary things that you need to prepare. So let me see. I hope I haven't missed anything for this. तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. इसमें ओएमआर शीट पर होता है, पेन पेपर टेस्ट है. तो आपने पता है, आपने अब तक क्लैट दिया है, आपने अब तक एलिट दिया है. ओएमआर शीट पर आप कंफर्टेबल होगे देने के लिए एग्जाम. कोई गलत ऑप्शन ना लगा दो. मेक श्योर यू आर डूइंग इट, एंड यस, इट्स अदरवाइज इट्स डन. यू आर गुड टू गो फॉर दिस एग्जाम. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू दिस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप पूछ सकते हो. बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई मेरे यूट्यूब चैनल पर, वेर आई एम डीलिंग विद लीगल रीजनिंग मेजरली. बहुत सारे सेक्शंस में भी बनाए हैं बिकॉज वी हैव फैकल्टी फॉर इट नाउ. सो वी वुड बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस. प्रैक्टिस सेक्शंस वुड आल्सो बी अपलोडेड. सो you are good to go, right? Any doubts, feel free to post them down on the comment section below. और Instagram पे DM कर देना. Telegram डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना हुआ है, उस पर डाउट्स डाल देना. एंड यस, इफ यू हैव माय नंबर, मेरे को व्हाट्सएप पर डाल देना, उसमें भी कोई इशू नहीं है. सो और लेट्स सपोज if you're there on LinkedIn, you can also post it on LinkedIn. People usually send me LinkedIn के invitations and then they chat with me regarding their doubts. मेरे LinkedIn के पर्सनल उस पर, प्रोफाइल पर. तो आप उस पे अवॉइड करिएगा वैसे, बट अगर अर्जेंसी है देन यू कैन डू इट. अदरवाइज कॉन्टैक्ट मी ऑन द लिंक्डइन बिजनेस पेज ओनली और ऑन इंस्टाग्राम. बट इवन इफ यू डू इट ऑन लिंक्डइन, no worries, I'll be happy to deal with the doubts of my students, right? So stay tuned. Bye.